Purusham Namaha
Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Oh Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagate Sadma. Shri Guru Charana Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagate Sadma. Shri Guru Charana Banda mujhe savadhana mate. Banda mujhe Banda mujhe savadhana mate. Banda mujhe Jahara prasade bhan e bhavatare aya e. Jahara prasade Jahara prasadeva evavatare aya e. Jahara Krishna prapti haya haite. Krishna prapti Krishna prapti haya haite. Krishna prapti Guru mukha padma vakya chitete kare ayaka. Guru mukha Guru mukha padma vakya chitete kare ayaka. Guru mukha
आराधना करिहा मने आशा आराधना कर आराधना करिहा मने आशा आराधना कर श्री गुरु चरण रते यही से उत्तम गति श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण रते यही से उत्तम गति श्री गुरु चरण प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये चक्षुदान दिला दे जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिला दे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति आहते अभिरावे नाशयते प्रेम भक्ति आहते अभिरावे नाशयते वेदया हर चरिता वेदया वेदया हर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकना लोक राजवाना लोकना लोक राजवाना लोकना हा प्रभु करो दया तो हमर पद छाया हा प्रभु करो दया तो हमर पद छाया प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया प्रभु हे दया घुसकुतिर भुवाना हे दया घुसकुतिर भुवाना दिला प्रभु का पतित पवाना दया प्रभु पद जय प्रभु पद जय जय प्रभु विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता समिति नामिने
वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath. Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath Swami. Bolo Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath. O Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Bhavatu me, Jagannath. O Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Bhavatu me, Jagannath. Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva.
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। त्रिभुवने करे जा चरण बंदन। त्रिभुवने करे जा त्रिभुवने करे जा बंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जय नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलाचले शंख चक्र नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नदिया नगरे दंड कमंडल कर। दंड कमंडल नदिया नगरे दंड कमंडल कर। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। केह बोले पूरबे रावण बधिला। केह बोले पूरबे रावण गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। गोलकेर लीला गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करिला। गोलकेर जय जय
जगन्नाथ सचिदानंद ना जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवने करे जा चरण वंदन त्रिभुवने करे जा शिरधर भवे वे गौरवता शिरधर भवे वे गौरवता हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार वासुदेव घोष कहे करे जोड़ वासुदेव घोष कहे करे जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैच करो। राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Ram, Hare Rama, Rama Ram. Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Baladeva, Jai Ma Subhadra. Jagannatha Swami, Nayana Pathagami. Nayana Pathagami Bhavatu me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Tube, Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaur Paramanande. जय ओम विष्णुपाद प्रभहंस जय डिवाइन ग्रेस भजन श्री प्रभुपाद की ISKCON विविधि भजन श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद प्रभहंस जय डिवाइन ग्रेस श्रील भक्त ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की नमस्कार श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री के चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की राधा कृष्ण श्याम कृष्ण गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री पुष्ट जगन्नाथपुरी धाम की गंगा जमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की एक धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय श्री सीधा मदन मोहन जी की जय जय श्री श्री गौनिताय जी की जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल ऑल गोइस assembled devotees हरे कृष्णा ऑल गोइस assembled devotees हरे कृष्णा ऑल गोइस श्री गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा The morning Sri Bhagavatam class begin by His grace Surdas Prabhu सुदास प्रभु जी की जय श्रील प्रभुपाद की जय।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. Little volume, less. Little. Hare Krishna. Hare, this Prabhu is completely shaved off. Who can volume thoda kam? श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजजान रंजना, यशोदनंदन व्रजजन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजजन रंजना, यशोदनंदन व्रजजन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव
Kunja Vihari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajanarandana. Yashodanandana Brajajanarandana. Yashodanandana Brajajanarandana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jai Radhe, Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Jai Gaurani, Jai Jai Gaurani, Jai Jai Gaurari, Jai Gaurari. Nitai Gaurango Gaurari, Patita Pavana Gaurari. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Gurudev. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Gurudev. Jai Vishnupada Paramahansa Acharya Stotra Sat, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Vibhuti Founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai.
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ राधा कुल श्याम कुल गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, गंगामय जमुनामय की जय, वृंददेव तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल प्रसाद वितरण प्रोग्राम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेम आनंदे। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 11, and the verse number is 13. Samskara yatra vichinam Swadijo ajo jagatyam ijyadhyayana danani vihitani dvijanamanam janma karmadvaitanam kriyas charsma choditham samskara yatra vichena swadijo ajo jagadayam ijjadyana dhanani vetani dujanamana janma karma avdhatana kriyascha shram chodita samskar yatra avichanam swadijo ajo jagadayam ijjadhyana dhanani vihitani dujamana janma karma vadhatana kriyasashrama chodita.
Mothers, word to word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki samskara, reformatory processes, yatra, wherein, avicchinnam, without interruption, sa, such a person, duja, twice born, Aja, Lord Brahma, Jagad, sanctioned, Yam, who, Ijaya, worshipping, Adhyana, studies of Vedas, Danani, and charity, Vihitani, prescribed, Dujanamanam, of persons who are called twice born, Janama, by birth, Karma, and activities, Avadatanam, who are purified, Kriyam, activities, Cha, also, Ashrama Chodita, recommended for the 4 ashrams. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Those who have been reformed by the Garbhadan ceremony and other prescribed reformatory methods performed with Vedic mantras and without interruption, who have been approved by Lord Brahma, are dujas, or twice born. Such Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, purified by their family traditions and by their behavior, should worship the Lord, study the Vedas, and give charity. In this system, they should follow the principles of 4 ashramas: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Kindly repeat after me. Those who have been reformed by the Garbhadhana ceremony and other prescribed reformatory methods performed with Vedic mantras and without interruption, and who have been approved by Lord Brahma, or dujas, or twice born, such Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, purified by their family traditions and by their behavior, should worship the Lord, study the Vedas, and give charity.
In this system, they should follow the principles of 4 ashramas: brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. After giving a general list of 30 qualifications for one's behavior, Narad Muni now describes the principles of the 4 varnas and the 4 ashramas. A human being must be trained in the above mentioned 30 qualities, otherwise he is not even a human being. Then among such qualified persons, the varna ashrama process should be introduced in the varna ashram system. The first ceremony for purification is Garbhadhan, which is performed with mantras at the time of the sex for propagating good child. One who uses sex life not for sensual pleasures but only for begetting children, according to the reformatory method, is also accepted as brahmachari. One should not waste semen on sensual pleasure, violating the principle of Vedic life. Restraint in sex is possible, however, only when the populace is trained in the above mentioned 30 qualities, otherwise it is not possible. Even if one is born in a family of dujas or twice born, if they have not followed the reformatory process, he is called duja bandhu. Not one of the twice born, but a friend of the twice born. The whole purpose of this system is to create good population. As stated in Bhagavad Gita, when women are polluted, the populace is Varna Sankara, and when the Varna Sankara population increases, the situation of entire world becomes hellish. Therefore, all the Vedic literature strongly warn against creating a Varna Sankara population. When there is Varna Sankara population, the people cannot be properly controlled for peace and prosperity. Regardless of great legislative assemblies, parliaments, and similar bodies. Om Ajnanitimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunvitam Yenai Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurase Namo Brahmana Devaya Go Brahmahitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Nabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Namustate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Hari Pariye Vancha Kalpatrubhyasya Kripa Sindhubhe Vacha Patithanam Pavanebhyo.
would like to welcome you all to this Sunday Bhagavatam class. As you know that we have been studying the Charitra of Prahlad Maharaj and his teachings. And this was all narrated to Yudhishthira Maharaj, Dharmaraj. Since he's called Dharmaraj, he's inquiring furthermore about the activities and the symptoms of real society, which consists of 4 classes. And this inquiry is coming from none other than the best devotee of Krishna, Yudhishthira Maharaj. And the best devotee is also narrating. Narad Muni has got a very special qualification. As you know that Brahmaji had how many sons? 4. And furthermore, okay. But out of that all we see that Narad Muni has emerged as the best of the devotees. And since he is the best of the devotees, Yudhishthira Maharaj is inquiring from him, because he was Bali Maharaj. All these people, ये सभी महाजन भगवान का सदैव चिंतन मनन करते रहते हैं. And O King Yudhishthira, this principle of religion is to be understood as evidence. On the basis of this religious principle, everything is satisfied, including one's mind, soul, and even one's body. This is very, very important. जो धर्म के ये सभी निर्देशन अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उनका मन सदैव शांत रहता है. जो धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, जो अधर्मी हैं, उनका मन कभी शांत नहीं रहता है. कर्मियों का मन कभी शांत नहीं रहता है. वो सदैव मन उनका चंचल रहता है. मगर जो धर्म पे चलते हैं, उनका मन सदैव एकाग्रचित रहता है. वर्तमान सोसाइटी की सबसे बड़ी विडंबना है कि उनका मन बड़ा चंचल है, और वर्तमान जो प्रोजनी हो रही है, उनका मन भी बड़ा चंचल है. क्योंकि न धर्म में रुचि लेते हैं, न उनके माता पिता धर्म में रुचि लेते हैं, न बच्चे भी रुचि लेते हैं. इसलिए क्या हो जाते हैं? वो वर्ण संकर हो जाते हैं. मनुष्य जीवन में होते हुए भी जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनका नाम क्या कहा जाता है? वर्ण संकर. वो किसी न वर्ण में है, न कोई धर्म पालन करते हैं, इसलिए उनको वर्ण संकर कहा जाता है. वो वर्तमान की सोसाइटी वर्ण संकर से भरा हुआ है, क्योंकि वो धर्म के प्रति रुचि नहीं लेते. वो नास्तिकवाद में बिलीव करते हैं, या अधर्मी हो चुके हैं. जिन्होंने धर्म में भी अपने ट्रेडिशंस में जन्म लिया है, वर्तमान लोग, वर्तमान जो बच्चे हैं, वो भौतिक ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उस भौतिक ज्ञान के अंतर्गत उनकी जीवन में अर्थ उपार्जन करने की एक विधि प्राप्त होती है. मगर ये सब चीजें व्यर्थ हैं जब तक ये मन एकाग्र चित्त नहीं होगा. और यहां पर नारद मुनि कहते हैं कि जो भी धर्म पर चलता है, उसका मन जो है स्थित प्रज्ञ है, वह स्थिर हो जाता है. और दूसरा है, उसका आत्मा प्रोटेक्टेड रहता है, उसका आत्महनन नहीं होता है. जो धर्म पे चलता है, उसका भगवान प्रोटेक्शन स्वयं देते हैं, क्योंकि जो
अपने पिता के निर्देशन को संपूर्ण रूप से फॉलो करता है, उस बच्चे को भी आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए धर्महीन जो है वो पशु के समान है, मगर जो धर्म पे चलते हैं वो उनका आत्मा भी प्रोटेक्टेड रहता है, उसका आत्मा हनन नहीं होता है। और क्या, उसकी बॉडी भी कंट्रोल्ड रहती है। बॉडी मतलब क्या है? सेंसेस। हाँ, जिनके सेंसेस कंट्रोल में नहीं होते हैं वो वर्ण संकर कहलाते हैं, और जिनकी इंद्रियां संपूर्ण रूप से कृष्ण में नहीं रहती हैं वो भी वर्ण संकर ही कहलाते हैं। मगर जो धर्म के कार्य पे चलता है वो सदैव बैलेंस्ड लाइफ को पालन करता। मगर प्रभुपाद जी इस पर्पट में एक बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भागवत गीता का श्लोक 15-15 में कि सभी वेदों का मायने क्या है, कि हमें जानना है कि भगवान कौन है। सभी वेदों के अध्ययन के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। और जो भी इन वेदों का अध्ययन करता है उसको पता चल जाता है वास्तविकता में भगवान मूल कारण है, सभी कारणों के कारण भगवान हैं। इसलिए but therefore whether one speaks of the Vedas, scriptures, religion or the principle of everyone's occupation duty, all of them must aim to understand Krishna. जो भी अपने आप को धर्म के कार्य पे समझते हैं, चल रहे हैं या कुछ, उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि वो समझ जाएं, चाहे वो कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर वो ग्रंथ के बाद ये समझ नहीं पाता कि भगवान कौन है, मतलब वो फ्यूटाइल अटेम्प्ट है, उन्हें जानना चाहिए कि कृष्णस तू भगवान स्वयं। अगर हम कोई भी रिलीजन में हो, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान सभी कारणों के कारण है, वो सभी अध्ययन, वो सभी साधना विफल है, किसी भी धर्म में क्यों ना हो। चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तब आपके जीवन का सभी कार्यक्रम व्यर्थ है। प्रभुपाद जी ये वेरी क्लियरली बता रहे हैं। ऑल ऑफ देम मस्ट एम एट अंडरस्टैंडिंग कृष्ण, the supreme personality of Godhead. Srimad Bhagavatam therefore concludes, savai pumsam paro dharmo yatho bhakti adhokshaja ahituki apriti hata yayatma suprasiddhati. In other words, religious principles aim at learning how to render devotional service. सभी शास्त्रों का सार यह है कि हम भगवान की सेवा कैसे करें। अगर हम भगवान की सेवा ही नहीं कर रहे हैं तो उस डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या है फिर? दैट सर्विस मस्ट बी अनमोटिवेटेड एंड अनचेक्ड बाय मटेरियल कंडीशंस. द ह्यूमन सोसाइटी विल बी हैप्पी इन ऑल रेस्पेक्ट्स. प्रजा तभी सुखी हो सकती है जब वो भौतिक विचारों या कामनाओं के बगैर भगवत भक्ति में रत हों, तभी ये सोसाइटी सुखी हो सकती है. सभी स्क्रिप्चर, स्मृति, पुराण आदि वगैरह सबका सार यही है कि वन शुड लर्न ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम श्रुतिज, वेदास, फ्रॉम श्रुति द स्क्रिप्चर्स फॉलोइंग द वैदिक स्क्रिप्चर. तो रूप गोस्वामी कहते हैं हर कृष्ण कॉन्शियस भक्त को क्या पढ़ना चाहिए? भक्ति रसामृत सिंधु. इसलिए जब भी आप लोग सब यहां पर आते हैं, जो भी नव दीक्षित भक्त हैं या जो नए भक्त लोग आते हैं, तो उन्हें उपदेशामृत, भक्ति रसामृत, पहले इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए.
इससे पहले कि हम भागवत गीता को पढ़ें, हम सभी, प्रभुपाद जी ने सबको निर्देशन दिया है कि हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए और उपदेशामृत पढ़ना चाहिए। इसके अध्ययन के उपरांत आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे हम इस मन के वेग को, जीवा के वेग को या इंद्रियों के वेग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिनके जीवन वेग विहीन है, कंट्रोल विहीन है, वो पशु के समान है। भले ही वो नर रूप में हो या नारी के रूप में है, अगर उनके जीवन में कोई संयमित जीवन नहीं है, वो पशु के समान समझना चाहिए। पशु के समान मतलब क्या है? अब देखिए, कुत्ता यहां पर सुबह चलता है, चाहे वो मंगल आरती हो या चाहे वो दर्शनारती हो, वो आपस में लड़ते रहते हैं, है कि नहीं? आज जो सुबह मंगल आरती आए थे, उन्होंने देखा 4-5 कुत्ते लड़ रहे थे आपस में। उनको क्या पता चल रहा है कि मंगल आरती क्या चल रही है? इसी तरीके से मनुष्य योनि में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको क्या मतलब है मंगल आरती से? उनको तो उठना है सुबह 9 बजे। आज तो संडे है, हम जाएंगे सेंट्रल पार्क में, वहां पर बोलेंगे, हाय कैसा है, कैसा रहा तेरा 7 दिन का काम, कैसा रहा है? हाँ, तुमको चूसा गया अच्छी तरीके से मेट्रो वर्ल्ड कि नहीं? फिर शॉर्ट पहन के आ जाएंगे, टी शर्ट पहन के आ जाएंगे, हाय 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 हाय, बहुत। फिर पता चला गोल्फ भी खेलेंगे। उद्देश्य विहीन सोसाइटी इज जस्ट लाइक एन एनिमल बिकॉज दे आर चिर्पिंग लाइक क्रोज. That chirping which grows without any meaning has no meaning at all. It is not bringing you substance. Of course, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय पे चर्चा तो करते ही हैं, मगर उनको ही भी ये पता चलना चाहिए कि चाय हमारे भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। प्रातःकालीन चर्चा बोलो, ब्रह्म मुहूर्त का चर्चा बोलो, चाय पे चर्चा क्या बोल रहा है? हा? चाय तो ब्रिटिशर्स का देन है, हमारा देन थोड़ी है भाई। सो इसी तरीके से संसारी व्यक्ति जो है, संडे मिल जाता है, वो सेंट्रल पार्क में देखिए कितने लोग हैं, और यहां पर देखिए कितने लोग हैं। वो कारों में सेंट्रल पार्क चले जाएंगे, वहां पर कम से कम एटलीस्ट 400-500 कारें होंगी वहां पर इस टाइम। सो द टॉक विच इज हैपनिंग, इट इज मीनिंगलेस. द टॉक विच इज हैपनिंग अमॉन्ग द मटेरियलिस्टिक, इट इज नो यूज. बट हियर इट इज सेड दैट इफ वी वांट टू बिकम very, very ardent lovers of devotional service, we have to learn. श्रुति स्मृति पुनार आदि, इससे हमें अपने आप को सोक करना है. So the Prabhupada ji अपने, we have to understand the acharyas when he is writing the purports, and you must, each and word must be grasped in such a manner that it can make you tranquil. The purport is that to become a devotee, one must follow the principles laid down in Shruti and Smriti. One must follow the codes of Puranas and Pancharatriki Vidhi. One cannot be a pure devotee without following the Shruti and Smriti, and the Shrutis and Smriti without devotional service cannot lead one to perfection of life. श्रुति और स्मृति के पुराणों के अंतर्गत आपने सीख भी लिया जो कुछ, अगर वो कंप्लीटली कल्मिनेट नहीं होता डिवोशनल सर्विस, इस फिजिकल बॉडी को भगवान की सेवा में लगाना, जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक वो प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल. तो प्रभुपाद जी ने हमको बताया इस सोसाइटी में इस डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिकल शेप देना. डीटीज किचन में जाना, पतीले साफ करना, मंदिर में आना, मंदिर को साफ करना, नाम संकीर्तन में संडे के दिन उच्च स्वर से गाना, और भी लोगों को प्रेरणा देना कि कैसे कीर्तन किया जाता है, हरि नाम कैसे करना चाहिए.
तो आज 14 साल पहले जब हम लोग ने ये मंदिर स्टार्ट किया था तो 2-3 लोग आ जाते थे तो हम लोग खुश हो जाते थे कि अरे 4-5 लोग आ गए मंदिर में आज, क्योंकि ये पूरा कुछ नहीं था खारघर। हमारा मंदिर, टाटा हॉस्पिटल, बाकी कुछ नहीं था। मगर अब जब लोग, भक्त लोग आते हैं, हमारे सब लीडर्स को एक साथ संध्या आरती में धाई धाई करके नाचना चाहिए। सभी भक्तों को, सब यंग यूथ्स को नाचना चाहिए बड़े उच्च स्वर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जिसको इस हरि नाम की ध्वनि से रुचि भी नहीं होगी, जब कान के पर्दों में ये सम्मिलित कीर्तन की ध्वनि जाएगी, उनका हृदय भी जो कठोर है वो पिघल जाएगा। उनका हृदय कठोर हो चुका है। भौतिक वासनाओं को प्राप्त करने के लिए या रिझाने के लिए वो सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं। मगर ये जब सामूहिक भक्तों के कीर्तन की ध्वनि ऐसे जीवों के हृदयों में घोल करती है, मिक्स हो जाती है, देन ऑटोमेटिकली दैट सुसुप्त अवस्था की भक्ति जागृत हो जाती है। ये मंत्र का असर है, isn't it? जिस तरीके से आप रिन कपड़ा लेते हो या कोई भी कपड़ा, सोप लेते हो, गंदे कपड़े पे इस्तेमाल करते हो, आजकल तो एड्स भी आ जाते है कि नहीं? रिन है, वाइट है, दिस सोप है, वाइट है। जल्दी से झटपट से वाइट कौन कर देता? करेक्ट? तो ये अंदर का कपड़ा जो है कई साल जन्मों से गंदा पड़ा हुआ, वो कैसा साफ होएगा? बताइए कैसे साफ होगा? बाहर से हरि नाम लेने के साथ ये तुम्हारा कपड़ा साफ हो जाएगा। कानों की छिद्रों से ये हरि नाम तुम्हारे हृदय को साफ कर देता। और जब तुम्हारे अंदर में प्रसाद जाएगा, कानों में हरि नाम और पेट में प्रसाद, ये तुम्हारा जीवन का शुद्धिकरण अवश्य कर देगा। इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। Whether you know the importance of the holy name or not, it is going to transform your life. Because holy name is non-different from Supreme Personality of Godhead. When we are chanting the holy name, Ram Krishna Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. When we are chanting, this holy name has got effect because this is given by the Lord. This is not the activity of a materialistic person. This is not a Bollywood song. This is not a Hollywood song. This is holy name. And when you chant this holy name of Lord with complete surrender, you will transform yourself and you will be also transforming others. So I request all the leaders of Hare Krishna Kharghar movement, all the devotees, in the evening we must chant the holy name of the Lord collectively and help others to come closer to Krishna by this process. Srila Prabhupada, our Acharya, stood under a tree alone. But now that situation is not there. Now, by the mercy of Prabhupada, everything is coming and manifesting in the temples. People are becoming more and more, inclined to take up the process of Krishna consciousness because of certain reasons, well known to all of you. After the pandemic, people are quite realizing how insignificant their achievements can be if those achievements are not utilized in the service of Krishna. Even a smallest virus can completely demean your existence on the crust of earth. Even if you have all the gadgets of scientific things available to you for your sense gratification, but everything ceases at the time when
something happens, something pandemic happens. So my point is, when that one microbe can create an havoc, shouldn't the holy name of the Lord create a complete churning of that materialistic heart which is otherwise within our hearts? Isn't it? So that is why become compassionate. Leave any other responsibility at your homes and come here in the temple of Lord, chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram. And especially when the best of the devotees who are good singers, when they are singing the holy name of the Lord, even the rock can melt. Even the rock-like mentality can melt in Krishna praying. That is what is required. I hope you are all going to do that. Gokul boys, Gokul leaders, all, whether it is, Jagat Krishna Das, whether it is Ram Krishna Das, whether it is Sita Mohan Das, whether it is Samved Das, in the evening dance for the pleasure of the Lord, and in turn, many devotees will be getting benefited. If we bribe seclusion, it has no effect. But if we are together, yesterday most of the people had gone to many programs. So I came to know that other devotees were maybe busy here and there, but there were Saturday night, a lot of people, thousands of people are in the temple. So the resident devotees have to become very, very powerful in giving them the holy name. You cannot satisfy your senses sitting in the offices or homes. All those devotees, they have to come here and help others to become devotees. So, it is said, therefore, from all the evidences, the conclusion is that without bhakti, without devotional service, there is no question of religious principles. Prabhupada is saying, क्या religious principle का मतलब क्या है? जब तक तुम practical में अपने जीवन में धारण नहीं करते. God is the central figure in the performance of religious principles. God is the central main figure around which religious principles revolve. You are practicing it all for the pleasure of the Lord. And God is almost everything going on in this world as religion is devoid of any idea of devotional service. This is a big statement. And is therefore condemned by the verdict of Srimad Bhagavatam. Without devotional service, so-called religious principles are all only cheating. Now, we don't have to be categorically to tell what other people are doing, but we must be convinced about, by following the Vedic literature so nicely, that we should not get influenced. Sometimes we see, Kerala story has come. They are converting. This is nonsense. Only the weaker get converted. Those who know the real religious principle, they don't get controlled. They don't get, contaminated. They are very strong. They are sharp like sword. They cannot be just tamed by nonsense people, meat eaters, gamblers, sex mongers. They cannot influence somebody until unless one is, weak. Allah Ishwar Ek. Those who don't know who is God, they're completely beating around the bush. Whether it may be Islam, whether it may be Christianity, whether it may be Buddhism, if they don't know how to please Krishna, the Supreme Personality of Godhead, they're wasting their life. Savai pamsam paro dharma yatho bhakti adokshasa. The prime benediction on the human mind, human being, is that when they engage in devotional service unto the Supreme Personality of Godhead.
And that's what Srila Prabhupada is emphasizing on the purports. Rather being more categorical, he is very clearly telling what is the religious principle mean. And then we come to a very important person, shloka. Yesterday, Jagat Krishna Prabhu was elaborating this very, very nicely. And what is that? There are general principles to be followed by all human beings. Truthfulness. अगर सत्य के मार्ग पे आप नहीं चल रहे हैं तो कौन सा धर्म पालन कर रहे हैं? Then mercy, दया. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. जिस धर्म में हत्या सिखाई जाती है वो धर्म नहीं है, वो कैतव धर्म है. जिसमें पशुओं का वध, मानव जीवों का वध, ये कोई धर्म नहीं है. Sanatan Dharma is the eternal religion coming from God himself, Krishna himself. All these 2000 years, 2000, 1500 years, these are all Kaitava dharmas for satisfying your own senses, not satisfying the Supreme Personality of Godhead. Then bathing twice a day. Then tolerance, you should be tolerant. Discrimination between right and wrong, control of mind. वर्तमान स्थिति में जैसे हम बता रहे हैं, मन का संयमित मन नहीं है, इसलिए भगवान हमें कहते हैं इस संयमित विचलित मन को संयमित कैसे करोगे? भगवान का नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कंट्रोल ऑफ सेंसेस कैसे आएगा? ये जीवा का कंट्रोल कैसे आएगा? दारू पीने से, मांस खाने से, मदिरा पीने से, गुटखा खाने से, चाय पीने से, कांदा लहसुन खाने से ये जीवा का कंट्रोल कैसा आएगा? हमें भगवान कहते हैं इस जीवा को भगवान की सेवा में लगाओ. कैसे? भगवान का नाम स्मरण करो, इस जीवा से प्रसाद लो. भगवान बोलते हैं, जो भागवत गीता में ही बता रहे भगवान, जो मेरे को भोग नहीं लगाता वो क्या करता है? वो पाप खाता है. बिकॉज सब चीज भगवान से आता है, हमारा कुछ नहीं है. और जो भगवान को वापस प्रेम से खिलाता है उसको, और जो वापस देता उसको प्रसाद कहते. उस प्रसाद खाने से हमारी जीवा कंट्रोल हो जाती. हमारे सभी प्रक्रिया जो गंदे गंदे प्रकृति में है कंट्रोल हो जाते. इसका प्रूफ है. आप लोग सब देखिए, जो पहले नहीं कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्ति के बाद में आपने अपने जीवन में कुछ संयम लाया तो आप अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस और नो सर? चाय पीना अच्छा है क्या? दारू पीना अच्छा है? ठंडा बियर पीना अच्छा है? गुटखा खाना अच्छा है? असा कसा तुम्ही करता साहेब? सगळा तो वरिष्ठ लीडर तिकडे आहे, एखादा गुटखा अच्छा है. हाँ, देखा नहीं? बड़े बड़े लोगों का मुंह का कैंसर हो जाता है, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों का कैंसर हो जाता है. क्योंकि ध्यान नहीं दिया. स्टैचुरी वार्निंग है, सिगरेट पीना बुरा है, मगर फिर भी आजकल लड़कियां सिगरेट पीती हैं. ऑफिस में लंच टाइम में आ जाती तो अरे क्या हो गया भाई? हम लोग गांव में देखा करते थे, बुढ़ी लोग बीड़ी पीते. आजकल मॉडर्न टाइम में जीन और टी शर्ट पहन के और बॉम्बे में हर जगह ये देख सकते हो, ये सीन देख सकते हो. बीकेसी में चले जाओ, नरीमन पॉइंट में जाओ, कोलाबा में जाओ, यहां पर कॉलेजेस में जाओ, यहां पर सभी, यहां पर बाहर आके बहुत टेंशन हो गया. क्या हो गया? क्या हो गया? टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है. पढ़ाई का टेंशन सिगरेट से कम हो जाएगा क्या? सांगा तुम्ही यूथ, पॉवरफुल यूथ आहे, तुमचा इंटेलिजन्स आहे. You think you are all very great people. Sometimes young people, my life, my style, this and that. Oh, we also had that style.
We also had that style. We were also going to the college and everything. I was also smoking cigarette. I was smoking a Dunhill cigarette. Correct? So I was thinking I'm on the top of the world. हाँ, मेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं. इधर दिखाता 20 का पैक. हाँ? But somebody said, "Hey, यार क्या कर रहे तू?" मैं बहुत अच्छा कर रहा है. बहुत अच्छा कर रहा हूँ. I'm telling you, आप बीती, okay? I'm not just exaggerating. I'm telling you. When I was just 20 years boy like you, I was carrying 20 pack cigarette, Dunhill cigarette. उस वक्त 25 रुपए का पैक आता था. अभी तो पता चला 100 रुपए का हो गया. हाँ? So I was feeling very great at the time. I was thinking, oh, this girl is very beautiful and she will like me smoking cigarette. She will think that I'm a very matured boy. यथार्थ रूप बता रहा हूं आपको. At the time you like to make a nice haircut, this, that, it should look very beautiful. And then if your girlfriend says, oh, you look so nice, even if you look looking ugly, you feel, अरे भगवान, अरे यार आज तो मेरे दिल में ठंडक पड़ गया. This is what is happening in the colleges and the schools. But this didn't happen with me for a long time, my dear friends. But the intervention of the great, wonderful devotees transformed our lives. That's also mercy of the Lord. If you are following these principles of dharma from young age, then you will become very, very strong. And that point is coming now, I'm telling you. Why? We have got a wonderful young people here today. I'm touching that subject. Rather, Prabhupada ji is touching in this, verse itself. So, non-violence, celibacy, charity, reading of scriptures, simplicity, satisfaction, rendering service to the saintly persons, gradually taking leave of unnecessary engagements, observing the futility of unnecessary activities of human society, remaining silent and grave and avoiding unnecessary talk, considering whether one is in the body or a soul, distributing food equally to all the living entities, both men and animals, seeing every soul as a part of the Supreme Lord, hearing about the activities and instructions given by the Supreme Personality of Godhead, chanting about these activities and instructions, always remembering these activities and instructions, trying to render service, performing worship, offering obeisances, becoming a servant, becoming a friend, and surrendering one's whole life. O King Yudhishthira, these 30 qualifications must be acquired in the human form of a life. मनुष्य जीवन में ये 30 चीजें जो हैं, क्वालिटीज अपने जीवन में हमको धारण करना चाहिए. अगर ये 30 क्वालिटीज हमारे जीवन में धारण नहीं हुई हैं, हम कोई ढंका नहीं बजा सकते कि मैं भी भक्त हूं. So these 30 qualities can be only executed, can be cultivated when you are in the association of the devotees. You can have a devotee friend in your college also, whom you can get impressed upon. And you will remember that friend still. And these are all the practical aspects. When I was also a professional, so I had also a couple of friends. There were so many in the institution when you are doing graduation, post-graduation, so you have many friends. But you don't meet or you don't adore every friend. But some friends are there, they become your real friends. And they remember you even till your death also. है ना, कुछ ऐसे मित्र रहते हैं ना, करेक्ट है कि नहीं? तो मेरा भी एक कॉलेज का मित्र था.
ये बोला ये मित्र किधर गया? ध्यान से सुनो आप. And he found out that I have joined the ISKCON movement. And somebody told him that he's joined the movement. And for 40 years, he didn't contact me. 40 years. And after 40 years, he just contacted me. He said, I hear you now speaking on the live. Maybe he must be also on the line. Nowadays he's in Visakhapatnam. So he said, I like you, what you are speaking. And he told me, I liked you also then when we were friends in the hostel. Because we both used to go together. I was studying in Chennai at the time. So we both used to go in the morning at 6 o'clock to the temple. And then in the evening also at 7 o'clock we used to go to the temple, both together. Then I told, he was a South Indian friend of mine. So I remember what powder you are using. And do you know what he was telling? I remember you used to like this type of a lungi. You used to wear that lungi. So when you have good pals, you try to remember good things in your life. And if you don't have good pals in your young age, they can drive you to different place. चलना आज थोड़ा सा पी लेते हैं. मैंने कभी पिया नहीं है. अरे चलना थोड़ा सा पीना, कैसा टेस्ट होता है. So in my whole life I didn't drink. When I came to my professional life, one of my professional friends said, तुमने बियर पिया क्या? बोला मैंने तो कभी पिया ही नहीं, बचपन से. हम तो होटल में भी नहीं खाया, बचपन में कॉलेज लाइफ में भी नहीं पिया. आज चलते हैं क्या? आज तुम्हारा तो बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल गया, आज थोड़ा सा सेशन मनाते हैं. So they wrong friends invite you for doing wrong things, and right friends lead you to right path. And Sudhanshu Shekhar Prabhu is taking the group towards the right path today, correct? They come along with you, Sudhanshu Prabhu. So it's also a boon if you have a good friend in your life. It can change your whole life. Otherwise, what happens? Now hear this. Today's shloka and the purport what Prabhupada ji is talking about. My friends, it can happen. What is it? If we don't undergo the purificatory processes, Prabhupada ji is talking about, संस्कार विधि आपके जीवन में नहीं होगा तो आपका जीवन आध्यात्मिक रुचि नहीं लेगा. जैसे कि संस्कार विधि लगभग 10 या 12 होते बचपन से. तो पहला विधि है गर्भधान. जिस वक्त आप ये संकल्प करते हैं गृहस्थ जीवन में कि हमें बच्चा होना चाहिए, तो गर्भधान संस्कार के अंतर्गत हमें प्रभुपाद जी कहते थे अपने गृहस्थ बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, आपको भगवान से याचना करना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा जीव आत्मा भेजें जो भगवत भक्ति में निपुण हो और उनको भगवान पे 16 माला जप करना चाहिए, 64 माला जप करना चाहिए, इससे पहले कि वो गर्भधान करें. मगर वर्तमान स्थिति में सनातन धर्म को फॉलो करने वाले बहुत कम हैं. वो केवल बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, गर्भधान संस्कार नहीं देते.
इसलिए वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी डिफॉर्म चिल्ड्रन आर प्रोड्यूस्ड. देयर मेंटल स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट, दे आर वर्स्ट. व्हाई? बिकॉज दैट प्रोसेस इज नॉट हैपनिंग. अनप्रविष्ट. बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, 7 महीने, जिनके घरों में संस्कार होते हैं वो लाते हैं, स्वामी जी हमको अनप्रविष्ट कराना है, हमको ठाकुर जी का थोड़ा सा आधा चम्मच खीर मिल जाएगा क्या? Otherwise what happening? They are not doing this. Then after that what is the sanskar? जिस वक्त थोड़ा सा वो लिखने लगता है, उसका बाल पहले काटा जाता है. वो संस्कार बड़े जरूरी होते हैं, सीखा रखा जाता है. बच्चे को सभी कुछ देते हैं, पेन कलम, वो ये किताब, वो सब, राइस, वो ये सब देते हैं. वो बच्चा देखते क्या लेता है हाथ में. यस और नो? आपके साथ किया था माता पिता कि नहीं? बस हाँ? सुधांशु आपके साथ हुआ था ऐसे? माता पिता ने दिया था शाम? सो दिस इज ऑल प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस कि बच्चा क्या लेता है. एंड देन व्हेन ही गोज टू द स्कूल, सरस्वती की पूजा कैसे करता. Then of course when he is becoming little more, गायत्री कैसे उसको पहनाया जाता है. So these are all different purificatory processes happening, and Prabhupada is very clearly saying here for the young people here, one should not waste semen on sensual pleasures, violating the principles of the Vedic life. This is for the young people, especially when you are in the 20s and 21. There is an influx of so much of urge that you have no control on the senses. And some of our young youth boys came and they confessed in front of me. So they were doing artificially, taking out the semen out. And when they came into contact with ISKCON and ISKCON devotees, especially our youth forum, they transformed their lives. And they could see the effect of holding the semen within their body. And those who cannot hold the semen within the body, their memory is not sharp. They are not good at studies. If they are contemplating on the other side of the sex, they will be losing the taste of even studying the scriptures. It is either for the both, man or a boy or a girl, it doesn't matter. So if this havoc is happening with between 20 and 25, your life will be completely spoiled. But if you can hold what Prabhupada is very clearly saying, one who uses sex life not for sensual pleasures but only for begetting children according to the reformatory method is also accepted as a brahmachari. One should not waste semen on sensual pleasure, violating the principles of Vedic life. Restraint in sex is possible. However, only when the populace is trained in the above mentioned 30 qualities, otherwise it's not possible. जब 30 विधियों को आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से पालन करेंगे, तब जाके आप अपने वीर्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं. Even if one is born in a family of Dujas, Brahmana, if they have not followed the reformatory process, he is called Dujabandhu. और इसीलिए वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं कि सभी वर्णों और आश्रमों की स्थिति अस्त व्यस्त हो गई है. गांव से लेके शहर तक ब्राह्मण आदमी गेटकीपर बन जाता है.
वो चुटिया तो रखा हुआ है मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका महत्व मालूम भूल जाता है। इसलिए जब तक हम अपने धर्म पे नहीं चलेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं कर सकता। Especially the young boys and the girls, you all have to be very, very serious. How to control your senses, how to engage yourself in the process of devotional service. Even if your parents have not taught you, but this temple can teach you all the time. And if you become intelligent enough, it is not necessary that you have to study 24 hours. Out of 24 hours, if you are attentively studying 2 hours and you are focusing on Supreme Lord, you can conquer the whole front altogether. But you must get trained in dharma. Don't eat in hotels because all the hoteliers are not pure. Sometimes we have seen even the other religions, they spit on the food and give the people. Do you know that? So you have to be very cautious. What to eat, where to eat, and how to eat. If you are not conscious, in my life, till I passed out of the college, my parents didn't allow me to eat in hotels. I'm thankful to my parents, those who trained me very, very nicely. Till I passed out my college, it's only when I went into professional life, I became a little haywire. And when I entered the professional life, I was in a haywire life. So what to eat, where to eat, that's also a very art. Don't get impressed by Pizza Huts and Domino's and all these things. There's all dirty food. Nothing else. The sinful people preparing and sinful people eating. And what is going to happen? There's not going to be any change in the society. And those who have not controlled their senses, they will go crazy. That's why you will see so many riots happening in India, so all over the world. Why this craziness is happening? Because they have no control on the senses and there is no sanskara. That's why Western country is called Malaysia. Prabhupada ji used to say that Malaysia country. But if these Malaysias are also, inculcated with these principles of dharma, all these 30 qualities, they can be also changed. So Prabhupada, one great acharya, took a pain and transformed the Malaysias into Brahmanas and sannyasis, brahmacharis, grahastis, vanaprasthis, and they became better their life. That is the beauty of an acharya. So here it is very importantly said, all the Vedic literature strongly warn against creating Varna Samskara population. When there is Varna Sankara population, the people cannot be properly controlled for peace. हम peace चाहते हैं, मगर जब सोसाइटी में शिक्षा ही प्रदान नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में भागवत गीता और भागवतम कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा. On the other hand, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उसको बाइबल सिखाया जाता है, उसको पैसे के प्रलोभन से कन्वर्ट किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि हिंदू जाति बहुत वीक है. वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, उनको मंदिर नहीं ले आते हैं, इसलिए उनको अपने धर्म के बारे में मालूम ही नहीं, भागवत गीता के बारे में मालूम ही नहीं है, कुछ भागवतम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है. इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम सभी धर्म प्रेमियों से भी निवेदन करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, अपने बच्चों में संस्कार डालिए और अपने मित्रों में भी संस्कार डालिए. जो आपको इंद्र तृप्ति की ओर लेके जा रहे हैं, उनको आप इंद्र दमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के केंद्रों में ले आए, जहां पर उनको उत्तम श्रेणी का टेस्ट आध्यात्मिक का मिल सकता है, तो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट उनके जीवन से चले जाएंगे और आप आध्यात्मिक जीवन में आनंद 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 करते रहेंगे. यही regardless of great legislative assemblies, parliaments and similar bodies, ये सब होने के बावजूद भी अगर हम इन ग्रंथों को अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे और भगवत भक्ति की प्रक्रिया को अपने जीवन में अंग नहीं बना सकते, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे. Any questions or comments? Any questions? No questions? Yes, अकिंचन माधव प्रभु की जय हो. बताइए. कि वास्तविकता में जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास. We are actually eternal servant of Krishna. जब हम माया के दास बन जाते हैं तो सदा उदास रहते, मगर जब गुरु और कृष्ण के पास आ जाते हैं हम लोग असली दास बन जाते हैं. कृष्ण दास बिंदास हो जाते हैं. और बिंदास का मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्रेजी हो जाते हैं. बिंदास का मतलब ये है कि हम अपने स्वरूप को जानने लगते हैं. That we are the servant of the servant of the servant, and actually that is fact, isn't it? Aren't we das? But when we are influenced by Maya, when we are influenced wrongly with our material designations, we feel that we are very, very bossy. Actually we are servants. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम. जब ये उपाधियां खत्म हो जाएंगे तब जाके आपका ये देह जो है निर्मल हो जाएगा. हाँ, कभी कभी देखा गया, ध्यान से सुनिए आप, जो भी साधु बनते थे पहले उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता था, तो लोग बोलते थे अरे उसका कुछ हुआ नहीं इसलिए आप मंदिर में फ्री खाना खाने लगा. ये पहली धारणा थी. मगर श्रील प्रभुपाद जी ने जो पूरे विश्व भर में क्रांति लाई, तो आपने देखा कि स्वरूप दामोदर महाराज, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, वो क्या थे? साइंटिस्ट थे. जब उनको साइंटिस्ट मिलते थे वो उनसे ये इंप्रेस नहीं होते थे कि उन्होंने प्रभुपाद जी का शिष्यत्व ग्रहण किया. वो इसलिए इंप्रेस हो गए थे क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट थे, उनके पास डिग्री थी, उसके बावजूद भी वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे. उस डिग्री का उन पे कोई असर नहीं था, मगर वो डिग्री बाकी लोगों पे असर कर रहा है जो वो डिग्री के साथ समझते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो गया. मगर असली जीवन कैसे होना चाहिए फिर स्वरूप दामोदर महाराज बता रहे हैं. जैसे कि हम कोई डिग्री वगैरह प्राप्त कर लिए तो बाहर के लोग सोच रहे अरे तो डिग्री वाला है, फिर भी भक्त बन गया, कुछ तो बात होगा. मगर ये भौतिक डिग्रियों के अंतर्गत निजी जीवन में कोई उसका अभिप्राय नहीं है, मगर भौतिक अवस्था के लोगों पे उसको बड़ा गूढ़ प्रभाव पड़ता है. नहीं तो ये सोच रहे होंगे कह रहे ये सब टकला लोग है यार, सर इनका कुछ हुआ नहीं होगा इसलिए मंदिर ज्वाइन कर लिया. असली बात वो नहीं है. आपकी गुरुदेव को देखिए, उन्होंने डबल MBA मैकगिल यूनिवर्सिटी से किया. इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका सदुपयोग किया. वो क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के कार्यों को विस्तार किया. जब वो बुद्धि में नहीं होगा तब संभव नहीं हो सकता. यू आर यूजिंग द क्वालिफिकेशंस, जो भी भौतिक संसार की क्वालिफिकेशन है, और आध्यात्मिक जीवन में आगे और बढ़ा सकते हैं.
मगर वो निजी पे कोई असर नहीं। आपने गोपाल कृष्ण महाराज जी के जीवन में देखा क्या? एरोगेंट है, डिसीट है, वो है। हम लोग हो सकते, मगर जो समझ गए हैं गूढ़ रहस्य से कि भगवत धर्म क्या है, भगवान क्या है, हम क्या है, वो अच्छी तरह हम लोग सब लोग सीख रहे हैं। यस, yeah, because the modern times also were completely polluted. Now we are trying to focus upon what treasures we have in India, which is not anywhere, because it is falsely propagated, falsely thinking. Now we are coming to senses. Some other the environment has become such a conducive for your progress of spiritual life. Everybody is talking about it. Now you can see. अब साउथ इंडिया में चले जाइए, देखिए मंदिर कितने बनाए हुए हैं। उस वक्त लोगों के पास वो डिग्रियां नहीं थी, साइंटिफिक कॉलेजेस नहीं थे, मगर फिर भी उनके पास कितने उड़न तश्तरियाँ हुआ करती थी। उस पर भी आजकल साइंस उस पर मेडिटेट कर रहा है कि वो क्या था जिसमें वो लोग घूम रहे थे। एस्ट्रोनॉमिकली कब थी, मेडिसिन कब था, सर्जरी कब थी, क्योंकि हमारे ऊपर 300 वर्ष से लेके 500 वर्ष तक का प्रहार हुआ है मुगलों का और ब्रिटिशर्स का, और हमारी बुद्धि को कंप्लीटली कंडीशनड बना दिया वर्तमान स्थिति के साथ। मगर क्यों? जिस दिन हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे पता चलेगा कि भाई व्यासदेव जी ने इस भागवतम के अलावा कुछ है ही नहीं, ये ग्रेटेस्ट साइंस है, इसमें सब कुछ है। बाकी ये सब नियो गुरुज जो समझा रहे हैं, चुरा चुरा के उसको कोटिंग कर रहे हैं। वही प्रिंसिपल है जो भागवतम में है, मगर कोटिंग, शुगर कोटेड करके आपको प्रस्तुत करते हैं, सूटेड और बूटेड पहना के अब करते हैं। बट इफ यू स्टडी you will see the greatest science. Who can be more scientific than Lord? Who can be more scientific than Vyasadeva? So that is what we have to explore. And a human mind is always very, very volatile, because especially the modern time, nothing can be accepted from the face of it. So if you are a good, intelligent person, you will explore yourself. जैसे कि आपको मालूम है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो आप स्टॉप करेंगे। मांस खाने से तुम्हारी दया खत्म हो जाएगी, मदिरा पाने से प्राप्त करने से संतुलन बिगड़ जाएगा, गैम्बलिंग करने से तुम्हारी सच्चाई बिगड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं, एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। किसी को अगर स्पेयर कॉपी होगा तो हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Krishna, Krishna